Welcome to O-Level IGCSE. This is third session of the fifth of five in total. So dear students, question 1, can you guess it? If you can name 1 to 3. Yes, friends, what's 1? You can see in this 1. Kamil, Ramin, and Fatima. No, 1 is wall. This is membrane. Yeah, membrane has gone in. And you know this is vacuum. This guy is vacuum. Someone joined me. Welcome, Hassanul Abidin. And this is cell wall. Cell wall is double thick. This guy is cell membrane. And what's 3? Anyone? Thank you, Ramin, Fahd. This is cytoplasm. Okay, so what's the answer? You know, partially permeable means like does not allow some but doesn't allow other. So 2 is a must. Yes or no? So this cell wall is fully permeable. Have you heard of this? Fully permeable. Allows everything that fits in the gaps. Partially permeable means allows some but doesn't allow others. So which one is partially permeable, beta? Cell membrane. And the answer stands what? Delta. Nice. Question 2. Magnesium. You know some things you did not study, so I help you doing them. Magnesium is found in chloroplast. Have you heard of chlorophyll? Did you guys heard of chlorophyll? Have you heard of chlorophyll? Found in plants, है ना? Chloroplast के अंदर हसन नवाज, chloroplast के अंदर chlorophyll होता है ना? That has magnesium. Yes. Alpha, beta, Charlie, delta. Okay, this is leaf, right? Let me help you label. It's a leaf section. When leaf is cut from, look, this is, for example, leaf. Hello, friends. Do you see on the screen? So it's cut this way. I mean, look, if my hand is leaf, if it is cut this way, Kamil, and then the front view is seen, right? So the topmost layer is upper epidermis. This one is upper epidermis. What? Upper epidermis. आप अभी भी लिख सकते हैं, आप घर जाके इसको भी लिख सकते हैं जैसे आप, और ये क्यूटिकल होता है लीफ के ऊपर, क्यूटिकल, which prevents water loss. जैसे विंटर में आप जेली लगाते हैं ना फेस पे, पेट्रोलियम जेली होता है ना, वैसलीन वगैरह कोई जो चीज लगाते हैं ताकि ड्राई ना हो स्किन. तो क्यूटिकल, कैन यू सी क्यूटिकल? एक्शन लेयर, ये सेल से नहीं बनी होती है, नॉन सेल्यूलर. Then these are palisade mesophyll cells. This one is what? Palisade mesophyll cell. It has so many chloroplasts, you can see. A nucleus and this look. For example, ये वाला palisade, इसमें ये nucleus है, ये vacuole है, ये black वाले chloroplast है. अब आप देखें कि ये वाले जो irregular shape वाले कौन से हैं? Spongy mesophyll, ये वाला. It is spongy mesophyll. Irregular shape वाले spongy mesophyll cell. And then we label what? ये जो नीचे वाला होता है ना, ये leaf में lower side, this is xylem. It carries water and minerals. और ये ऊपर वाला phloem. So this is leaf diagram. थोड़ा सा चीजें आपको खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है? Phloem. And this guy is called lower epidermis. What do we call it? Lower epidermis.
So can you people now guess the answer? How many of you think? ए न्यूक्लियस है, ए इज न्यूक्लियस, और बी जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट ब्लैक वाले। अगर स्क्रीन पे आपको पिक्चर नजर आ रही है ना बेटा, देखो ये क्या है, वेयर एम आई पॉइंटिंग द कर्सर, व्हाट इज इट? असल स्क्रीन पे देखें प्लीज। नहीं जज़ाकल्लाह, अच्छा ठंडा। this guy, this one, हसानुल आबदीन, सुन रहे हैं आप मुझे? हसान, तो what is this man, this one? Nucleus, yeah, and what is this? Cytoplasm. देखो ये क्या है? this one, this nucleus, और ये black one काफी सारे जो है क्लोरोप्लास्ट। yeah, so what's the answer now? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है ना, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो कामिल भाई बीटा, हसन, हसन बेटा व्हाट्स द आंसर? देखें, शायद पता क्या कहते हैं, एक पोएट कहता है कि तुमसे पहले भी रातों को जागते रहने की आदत थी, तुमने छोड़ के बीच सफर के हम पे एक एहसान किया है, तारीकी में शब की तुमने अपने और हमारे गम को दफनाया, दफना कर फिर से जिंदा उसको आज किया है। फिर कहता है तन्हाई का लम्हा पाकर अशकों की बारात सजाए, तुमने मेरी बात के आगे चुप रह के बर्बाद किया। सही है, एक जमाना बीत चुका है, उससे मिलना भूल चुका है, शाकिर मेरा नाम सुन के जाने क्यों बेहाल हुआ। इसमें आपको अपनी पोएट्री कहने का थोड़ी सी सुनाऊं? या आई डू पोएट्री एट फ्री आवर्स, कभी कभी ब्लॉग भी लिखता हूँ मैं, सरगोशी के नाम से, सरगोशियां, विस्पर्स। तो बच्चों बात यह है कि आप मुझे बताएं बीटा इज द आंसर, आर यू ऑल कन्विंस्ड? हसन भाई बी क्या है? बी क्लोरोप्लास्ट। देखें जब नहीं समझ आ रहा आप मुझे रोक सकते हैं, बहरहाल पता है मुझे मुझे लिमिटेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, आई हैव गॉट प्रॉब्लम क्या, टाइम इज शॉर्ट। कुछ चैट भी आई है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसको मैं थोड़ा सा देख लूं। सर आई एम नॉट एट माय प्लेस, आई एम आउटसाइड, आई एम अनएबल टू। अच्छा ठीक है बेटा, प्लीज नो प्रॉब्लम हसन। तो देखें जी, ये बैक्टीरिया इज अ यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? या तुम लोग देखो, प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? रामीन मुझे बोले, आपकी तो मैं आज उसको शिकायत लगा दूं। फातिमा बकार, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, वीडियोस देखी है पिछली? तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता बैक्टीरिया में, यस और नो? लिवर सेल एनिमल सेल है, एनिमल इज अ यूकैरियोट। रेड ब्लड सेल डज इट हैव न्यूक्लियस? माशाल्लाह नो, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो वहां हेमोग्लोबिन होता। Then onion epidermal cell, epidermal मतलब skin, onion is a plant, plant is prokaryote, eukaryote, eukaryote, nucleus है, vacuole है, membrane bound structures है। What is X? X पता है, something which is found in everyone, है ना? हसन बेटा आप मुझे बताएं कि why not B? Because cellular cell wall is not present in, माशाल्लाह बैक्टीरिया में नहीं है, और लिवर सेल में नहीं है, रेड ब्लड सेल में, अनियन में होएगा। न्यूक्लियस रामीन, इट्स नॉट प्रेजेंट इन एंड बैक्टीरिया। यू नो बैक्टीरिया हैव न्यूक्लिक एसिड बट नो न्यूक्लियस। मुझे अच्छा लगा क्लास में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन आ रही है। अब आप लोग बोल रहे हैं ना, मुझे पता कैसे, इट्स अ फीलिंग लाइक आप फूड बनाएं और कोई अप्रिशिएट करे। आप फूड बनाए कोई खा ही जाए,
अब क्या लगा, आप अच्छी फूड बना रहे हैं? When you speak, it's more than a bread during a famine. No matter right or wrong, please do speak your answer. So nucleus, रामीन कह रही हैं, फात कह रहे हैं कि आरबीसी बैक्टीरिया में भी नहीं होता, आरबीसी में भी नहीं. Yes or no? और बेटा सैप वैक्यूल, it's only in plants, nowhere else. Nice, very nice. I guess it's repeated. ये पता है क्वेश्चन कौन से हैं? 2022 और 2021. जैसे जैसे सेव करूंगा, आप 2 साल के क्वेश्चन आपके सारे पूरे हो जाएंगे. थ्योरी आ गई है. ये कौन से सेल्स हैं? ए, नाइस, पेरिसाइड मेसोफिल है ना, अभी किया हमने. सी, बी स्पॉन्जी. स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ सेल्स ए और पार्ट बी. ए जो है पेरिसाइड मेसोफिल है और ये बी क्या है? स्पॉन्जी मेसोफिल. ये डायग्राम है, आपने इसमें कंप्लीट करना है. 1 क्लोरोप्लास्ट, 3 अदर टाइप्स ऑफ सेल कंपोनेंट्स. अब प्लांट सेल में क्या क्या होगा? वेरी गुड. एक आप सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेंगे, देन यू विल बी ड्राइंग ऑब्वियसली वैक्यूल. ओ माय गॉड, मैं ना ही बनाऊं तो ठीक है. सेल मेम्ब्रेन है ना, साथ साथ ये नहीं बन रही. एनीवे वैक्यूल भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा. यू कैन ड्रॉ, सॉरी न्यूक्लियस बड़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट. एनीवे या बट यू नो यूज लेबल लाइन. हो जाएगा ना लेबल करना. whatever you make, you label it. Yes जी हसन भाई, which is ये RBC है? Mr. Hassan Nawaz, do you think RBCs have nucleus? Only Hassan. Yes, no? No. Nice. So there's a lot of hemoglobin. और फिर इनकी शेप बाइकनकेव होती है. You know what biconcave is? Don't you know? Dear friends, we never studied this thing before. देखो, concave यूं होता है, यूं, और बाइकनकेव मतलब bent in from both sides. Physics. ये मैं बनाता हूँ. देखो ये मैं एक लेंस बनाता हूँ, ठीक है? हेलो बच्चों, हसन भाई, ये देखें, ये बेंट एन है, कनकेव है, और अगर इधर से भी यूं होगा तो वो क्या होगा? बाइकनकेव. RBCs आर लाइक बाइकनकेव. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स, और अगर इधर से भी होगा तो वो बाइकन्वेक्स. खैर एनीवे, तो कनकेव क्यों है? टू हैव मोर सरफेस एरिया. सो द आंसर इज चार्ली. नाइस. ये देखो जो है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे टेक CO2 फ्रॉम एयर, एंड व्हेन दे रेस्पायर इन रेस्पिरेशन, प्लांट्स टेक इन CO2 या गिव आउट CO2? Send CO2 out of them. When plants, beta, during the daytime, plants photosynthesize. Yes or no? Hassan bhai, photosynthesis में CO2, plants CO2 को consume करते हैं, give out करते हैं? आपसे पूछूं. You know CO2, आपने सुना ना, oxygen is a good gas. We take it from plants and we give them CO2. So plants consume CO2 and give out. That's why plants are considered blessing. लेकिन रात को अंडर द प्लांट्स नहीं सोना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज. दे डोंट गिव आउट ऑक्सीजन. दे ओनली रिस्पायर. दे रिस्पायर ड्यूरिंग द डे आल्सो, बट दे फोटोसिंथेसाइज मोर. सो देखो, जब रिस्पायर करते हैं तो CO2 गोज आउट या इन? नहीं, CO2 इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 विल गो इन. रिस्पायर करेंगे, इट मींस दे आर प्रोड्यूसिंग CO2. फोटोसिंथेसिस में दे आर कंज्यूमिंग. So what's the answer? Respiration में they don't take CO2 from air. You know, when do they take CO2 from air? Photosynthesis or respiration? कामिल बेटा नहीं ना. फाद देखो, प्लांट्स जो है ना, नहीं भाई बात सुनो. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एयर. Yes or no? In respiration, they send CO2 out. So it's something from D or B. So what's the answer? D. Because when they respire, it means inside plants CO2 is more or less. अगर वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो CO2 को यूज करते हैं, तो फिर उनके पास CO2 कम होगी.
When they respire, they have got more CO2 inside. Yes, no? They are throwing it away. I hope you understand my point. So delta. Yes. कल हमने पढ़ा था xylem is for conduction and support. Mr. Hassan, what is conduction? Hassan, beta, what is conduction? Kamil.